Assalamu alaikum. My name is Hafsa Yasin and today we are here with our second lecture of Public International Law. So, what is meant by the law of nations? The law of nation is the science of the rights exist between nations and states and of the obligations corresponding to these rights. Law of nations से क्या मुराद है? लॉ ऑफ नेशन जो है वो बेसिकली एक साइंस है जो ये बताती है कि एक नेशन और स्टेट के क्या राइट्स हैं या नेशन के स्टेट्स की तरफ कौन कौन से राइट्स होते हैं एंड अल्टीमेटली उन राइट्स की वजह से स्टेट को या नेशन को कौन से करस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना होता है. फॉर एग्जांपल, अगर नेशन के पास कुछ राइट्स हैं जो स्टेट ने प्रोवाइड किए हैं तो कुछ लॉज ऐसे हैं जिनकी ऑब्लिगेशन नेशंस पे मस्ट है. सेम इज द केस विद द स्टेट. अल्टीमेटली स्टेट अगर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फॉलो द लॉज ऑफ द स्टेट. द मीनिंग ऑफ द इंटरनेशनल लॉ. Modern approach says that the body of the law that regulates the activities of the entities possessing international personality. कि वो laws जो basically ऐसी activities को possess कर रहे होते हैं जो international personality से link कर रहे हों, these are known as international law. Traditional approach कहती है the conduct and relationship of the state. कि वो लॉज जिनकी बेसिस पे हम किसी दूसरी स्टेट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं या हमारा कोड ऑफ कंडक्ट जो लॉज डिसाइड करते हैं, these are known as international law. So what is international law? Basically defined, international law is simply the set of the rules that countries follow in dealings with each other. There are three distinct legal processes that can be identified in the international law that include public international law. Public international law means the relationship between sovereign states and the international entities such as International Criminal Court. Private international law, addressing questions of the jurisdiction in conflict. Public international law means वो law जो किसी sovereign state और international entities के दरमियान में होगा. Private law ऐसा law जब भी किसी स्टेट के दरमियान किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है तो एक प्राइवेट लॉ जनरेट हो सकता है. उसके बाद है जी सुपरनेशनल लॉ, द लॉ सेट ऑफ कलेक्टिव लॉज दैट सॉवरेन स्टेट वॉलंटरली यील्ड टू. लाइक ऐसा लॉ जो बेसिकली सॉवरेन स्टेट्स वॉलंटरली जो है वो किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं and they are bound to provide those services ultimately. So, but this basic definition must be supplemented with three more complex explanation. Is internationally law really law? The way the law of the United States enforced by the courts and the police are, where do we find the rules of the international law, and are they written down somewhere? Finally, how is the international law enforced and there is no word government? तो ये क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आते हैं कि इंटरनेशनल लॉ बनाता कौन है, इंटरनेशनल लॉ लिखा कहाँ हुआ है और ये इंटरनेशनल लॉ इम्पोज कैसे होगा, और क्या कोई एक ऐसी गवर्नमेंट है जो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट है जो बेसिकली इस इंटरनेशनल लॉ को इम्पोज करेगी. सो द डिवीजन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो लॉ होता है जो बेसिकली सॉवरेन स्टेट्स के दरमियान, सॉवरेन स्टेट्स और बाकी स्टेट्स के दरमियान में होता है कि, और ये लॉ बेसिकली उन स्टेट्स के रिलेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सप्लेन करता है. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लॉ है. अगर किसी स्टेट्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो ये लॉ बेसिकली उन स्टेट्स के स्टेटस को डिसाइड करता है.
What is private international law? The body of the law that regulates the relationship between persons and entities in different states. Private international law like conflicts of laws. फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टेट में जाते हैं और वहाँ आप जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो द लॉ विच विल बेसिकली डिसाइड द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड स्टेट will be known as private international law. The nature of the international law definition: the international law is the collection of the rules and norms that states and other actors feel an obligation to obey in their mutual relations and commonly do obey. कि जब भी दो स्टेट्स आपस में रिलेशन बनाएंगी तो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा. उसके बाद जी, uh, in the past, international law was commonly described as the law that regulates the relationship between the states among each other, or the system of the legal norms, regulations, which are relations between the states, the set of rules recognized by states and concerning their external relations, set of rules binding within the international community. Like international law basically क्या है, जो basically दो states के आपस के relations को define करता है. ये एक ऐसा लॉ है जो बेसिकली दो स्टेट्स आपस में म्यूचुअली डिसाइड करती हैं. ये एक ऐसा लॉ है जो बेसिकली स्टेट के एक्सटर्नल रिलेशंस को बिल्ड करता है कि एक स्टेट ने अपने एक्सटर्नल रिलेशंस को दूसरी स्टेट के साथ किस तरह से मेंटेन करना है, और ये लॉ दो स्टेट्स को आपस में बाउंड भी रखता है. Okay, ji, this lecture was just to clear your concept about the international law and public international law. From the next lecture, we will start properly from the United Nations Charter, that what are the laws which are basically implemented internationally, and what are the member countries, and ultimately how it is important for the states to follow these laws. Thank you so much.